नमस्कार। आज संडे 10 जुलाई 2022 को डॉक्टर KKSCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स DRKK अग्रवाल के पेज, डॉक्टर KK अग्रवाल के यूट्यूब और फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और आज हमारी जो राउंड टेबल में जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत सर के KK अग्रवाल जी के से बहुत के जुड़ा हुआ था, जिसपे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों की सेवा की, कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड क्लाइमेट क्राइसिस इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों का इंटीग्रेटेड जो है सब्जेक्ट है, इसको हमने आज लिया है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड क्लाइमेट क्राइसिस इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो SDGs हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल में, जब मार्च 2020 में ये कोविड-19 शुरू हुआ और उसके बाद एटलीस्ट मोर देन 2 इयर्स क्या क्राइसिस रही, और अकॉर्डिंग टू जो WHO डैशबोर्ड है ऑन कोविड-19 ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 550 मिलियन कन्फर्म केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अंटिल 8 जुलाई 2022 तक, and more than 6 million global confirmed deaths are reported, और more than 43 million cases were recorded in India, and more than 5 lakhs people died due to this COVID pandemic. आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज नंबर्स तो बोलने में तो लगता है कितने नंबर है, बट उन पे कितना इम्पैक्ट हुआ होगा इन एक फैमिली पे, अगर आप उसका एक डेथ पे कितना, उसकी फैमिली पे कितने लोगों पे उसका इम्पैक्ट रहा होगा, उनकी जो उनकी डेली लाइफ के जो नीड्स पे है, उनकी पूरी इंटायर जो है उनके इमोशंस पे उसका कितना इम्पैक्ट रहा होगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। और पर्टिकुलरली जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो पर्टिकुलरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज have faced higher cases of COVID-19 as compared to rural area, but definitely वहाँ पे भी है, but urban centers में इनका impact बहुत ज़्यादा रहा। जो recent है UN जो रिपोर्ट है, United Nations report says that the COVID-19 pandemic along with climate crisis पे हमने बहुत से प्रोग्राम किए, तो COVID-19 pandemic and climate along with climate crisis and increased number of conflict around the world, आप रिसेंट देख रहे हैं हर कंट्री में जो भी नेबर कंट्री के साथ जो है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हैव प्लेस्ड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन जियोपैरिटी। दैट वाज दी बिकॉज ये जो हमने टारगेट लिया था, और अभी सभी जानते हैं दी 17 जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विच कंटेन 169 टारगेट्स टू अचीव बाय 2030, रेंजिंग फ्रॉम eradicating जो poverty and hunger, improving health and education, providing basic services such as drinking water. These were adopted by about 200 countries, including India in 2015. These were adopted by the United Nations as a universal call to action to eliminate poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. But जो रिपोर्ट्स कहती है, जो अभी इम्पैक्ट हुआ है, this report underline how our pandemic has pushed millions into poverty and how the climate crisis is worsening the situation. Both. अब दोनों का जो इम्पैक्ट रहा, जो पर्टिकुलरली कोविड-19 पैंडेमिक का और क्लाइमेट क्राइसिस का, जो हमारे गोल्स थे उस पे कितना इसका सिचुएशन को वर्स किया है। About 1 in 10 people worldwide were suffering from hunger. Nearly 1 in 3 people lack regular access to adequate food. Even including in 2020 itself, the global prevalence of anxiety and depression increased by about 25%, with young people and women most affected.
And due to this impact of COVID-19 and climate crisis and this conflict going around the world, if you consider the current rate, then in 2030, 1.6 billion people will lack safely managed drinking water. 2.8 billion people will lack safely managed sanitation, and 1.9 billion people will lack basic hygiene facility. तो आप इनका जो 17 गोल्स हैं उनमें डेफिनेटली रेंज है बहुत, जो मैंने बताया कि जैसे सब पॉवर्टी है, हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट एक्शन है, एंड डिफरेंट आपके जो सस्टेनेबल सिटीज है, बहुत से इसमें एक्शंस हैं, बट इनका कितना इम्पैक्ट रहा है ड्यू टू दिस जो आपके 3C हैं, कोविड-19, क्लाइमेट क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी कंट्रीज, इनका बहुत इम्पैक्ट रहा। इसी पे आज हम हमारे एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे और इस पे कि हम इसको, बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो टारगेट 2015 में जो हुआ था कि 2030 तक हमारे जो 169 टारगेट्स है हम कितना अचीव कर पाए। आई थिंक जो भी हमारा जो 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, बट कोविड की वजह से हम आई थिंक जो है 4-5 साल पीछे चले गए हैं जो हमने स्टार्ट किया था, और इसी पे हम आज हमारी डिस्कशन है। तो मैं अगेन विद दी व्हाटएवर दी जो व्यूज हो, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्यागी सर से फर्स्ट पार्थोस त्यागी जी से कि स्टार्ट करें जो आज सिचुएशन है कि हमने तो बहुत बड़े बड़े टारगेट किए थे 2030 तक, बट उसमें क्या इसका है जो ये सिचुएशन रही, जो हमारे 17 गोल्स पे एसडीजीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो ओवर टू त्यागी सर। थैंक यू। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ही वेल थॉट हैं और शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जो कि बची हो ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, मगर जो कमियां हैं मैं उनको बतलाना चाहूँगा। वो ये कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को अलग अलग करके अब की बार भी देखा गया। वाटर सप्लाई से जो इनसैनिटेशन होता है वो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए उसको दूर करने का, और वो नहीं होता। उसका नतीजा ये है कि शहरों में भी the extent of supply of water is higher and the extent of sanitation, of removal and treatment of wastewater and sewage is much poorer. So it would be a better step to consider. Namaskar, sir. Namaskar, Sanjeev ji. It will be a better step to consider water supply and wastewater management as a single scheme, and this might be a small amendment in the SDGs. The second thing is that when we think of water supply, we go ahead and supply water. The agency responsible for supplying water has no commitment towards ensuring that the sources of supply are not depleted. As a result of that, you know that whether it is for agriculture or whether it is for drinking water, groundwater has been extracted to such an extent that the groundwater table has gone down by 10 meters somewhere and somewhere 20 meters or even more. Now, if the water supply project is not merely for supply, but is also a water resources project, which means that the supply will be sustainable, then it will be a much better result from the sustainability point of view. This is another great lacuna, that water supply agencies are responsible for supply and not management for sources of water. These are a few stray thoughts which I have experienced, that whether it is Jal Nigam or whether it is some public health engineering department of a state, we have gone ahead with water supply without much consideration to the disposal of wastewater. The most recent project, very ambitious one, of supplying drinking water to every household
which is under the Ministry of Jal Shakti, again envisages supply of water into a household and has not correspondingly thought of either what will be the source from which this water will come, because even now we are a bit stressed as far as sources of fresh water is concerned. If this particular target is to be achieved, the stress will be even more. So in order to de-stress, there should have been a big program of water recharging the groundwater, rainwater recharging the groundwater, and other means of conserving and storage of water. Otherwise, we will again have storage sources falling short of our requirement. So this, I want to point out, has been a mistake which has been continuing nationally and internationally, of thinking of water supply without reference to either the source of water or without reference to the disposal of wastewater that is created thereby. Thank you very much for giving me the first opportunity. Thank you, sir. Very importantly, because this is a very practical experience, though in some municipality, water supply and the particularly wastewater management with one agency, but in the most of the municipality or the area, it's like supplying some kind of Jal Sansthan or Jal, then managed by Jal Nigam or something. It's a different agency, so they are not, the very coordination is there, and definitely these are the lacking in there and need to be, or particularly about the sources also in Delhi, like here we don't consider like this is supplied from the Ganga water or Yamuna water for Upper Yamuna canal or for Ganga canal or from the different sources by other states. So we don't consider the sources. Sometime we are not very well concerned that how this water is coming from the so far, and how we have to manage the leakage and other things. So very important, sir, points you raised that, and definitely at all municipality and all small towns also need to be considered. So thank you, sir. Now I request the Dipankar Sahaji to say about this today's topic. This is impact of COVID-19 pandemic and climate crisis and achieving the target of SDG. So over to Dipankar Sahaji. साहजी आपका म्यूट है. दीपंकर साहजी, हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. अच्छा ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं सर, आप आराम से जो है थोड़ी देर में. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी एसके गुप्ता जी से पहले, अगर इन द मीन टाइम जो है इफ यू कैन जो है से सम लाइट ऑन द टुडेस सब्जेक्ट. एसके, धन्यवाद. धन्यवाद जी. नमस्कार टू एवरीवन. मेरा इसमें सोचना थोड़ा सा कुछ त्यागी जी से मिलता है, कुछ अपने विचारों से प्रभावित हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस से. मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमें पास्ट की गलतियों से या भूतकाल में जो कुछ हुआ उससे सीखना चाहिए. हमने कोविड-19 के दौरान 2020 में 21 में बहुत कुछ सीखा कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्योंकि सभी लोग हेल्थ से इम्पैक्ट हो रहे थे और हर एक के मन में ये आया कि भैया सब कुछ छोड़ो, अपने हेल्थ को बचाओ. अगर हेल्थ है तो वेल्थ है. तो ये बात हर एक के जहन में घुस गई थी, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये बात थोड़ी थोड़ी जहन में से अब निकलती चली जा रही है. लोग भूलते जा रहे हैं, फिर उसी मैड रेस में लगते चले जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कोविड के इम्पैक्ट ने हमको ये बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि हेल्थ इज वेल्थ. तो ये जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इसके साथ मुद्दा जोड़ा, तो मुझे लगता है कि कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एफर्ट्स हों या जो भी इसके अंडर में प्रोजेक्ट लिए जाएं, उसमें सबसे पहले कंसिडरेशन ये सोचने की जरूरत है क्या ये हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या विल दे प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ. तो क्यों ना इसके लिए एक छोटा सा जैसे त्यागी जी ने सजेस्ट किया कि वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को एक साथ किया जाए. ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एफर्ट्स को और हेल्थ को जोड़ के रखा जाए. एक छोटा सा एक ऑडिट हर एक एफर्ट के साथ पहले कराया जाए कि क्या विल इट प्रोटेक्ट दी ह्यूमन हेल्थ, क्या ये हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इसी तरह से कोई वो तो नहीं पैदा करेगा.
अगर इस तरह का कोई एक ऑडिट शुरू हो जाए हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोजेक्ट्स में, तो शायद ये मैनकाइंड के लिए एक अच्छा वो होगा। क्योंकि कोविड-19 ने हेल्थ के साथ साथ ये भी बहुत अच्छे से सिखाया कि अपनी कॉन्स्पिक्यूअस जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने की बहुत सख्त जरूरत है। हम बहुत सारी चीजें नाजायज या बेकार जरूरत के मुताबिक नहीं खरीद रहे और जरूरत से आवश्यकता से अधिक खरीद रहे हैं, और जो बेकार में वेस्ट हो रही हैं, फिर वेस्ट का डिस्पोजल करना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो एक तो चीज ये सिखाई है कोविड ने कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन को कम करने की बहुत आवश्यकता है। और अगर वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारा एयर, वाटर, सॉइल इसके ऊपर भी इम्पैक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों को अगर हम हर एक जो फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रयास होने वाले हैं या जिनको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर इन दो चीज़ों का एक ऑडिट कराने की एक प्रवृत्ति डाल दें कि भाई ये पहले चेक करो क्या इनसे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कम होगा। अगर ऐसा होने लगे तो शायद फ्यूचर में मैनकाइंड की प्रोटेक्शन ज्यादा संभव हो सकेगी। बस मुझे इतना ही कहना था अभी इस स्टेज पे, और आगे और वक्त सुनते हैं, बात करते हैं। Thank you Gupta ji, thank you so much. This is really need to integration with the all the whatever the 17 goals with the health. This is very important because everything now related to health. और मैंने तो अभी देखा कि बिकॉज ये कॉमन मैन को जो भी 17 SDG हैं, तो अगर कोई नेट्स में देखेगा तो पढ़ लेगा, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका क्या है, उसको अभी आई थिंक अवेयरनेस की भी कमी रही कि जो हमने 2015 से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन एक कॉमन मैन तक कभी नहीं पहुंचा कि इस पे हमें एक्शन क्या करना है, और कॉमन मैन को क्या करना है। एक जो गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट कुछ करती है और उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा जो एक आज पहुंचना चाहिए कि जो 17 गोल्स का हर एक का उसका मीनिंग क्या है कॉमन मैन के लिए, उसमें उसको क्या करना है, उसको गवर्नमेंट को अगर नहीं कर रही तो उसके लिए क्या पुश करना है। आई थिंक उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो आई थिंक ये नीड टू बी वेरी वेरी अवेयरनेस इस फील्ड में कुछ लैकिंग रही है, तो पहुंचने की जरूरत है कि बहुत लोगों तक जो भी 17 गोल्स हैं उनका हर एक को कि उसको किस लेवल तक ग्राउंड लेवल तक पहुंचने की जरूरत है, उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो आई थिंक विल डिस्कस दैट। थैंक यू गुप्ता जी। नाउ आई रिक्वेस्ट दो द्वारका जी you are joined, but I'll request first Dr. Sanjeev Agrawal to say a few words, then I'll request Dwarkana ji to say. Dr. Sanjeev Agrawal ji. Hello. Yes sir. No, sir. Yeah. No, sir. Actually, I'm sorry, I was late in the meeting. Sure, for that, I apologize, but I don't have any comments on that. But water supply regarding Tyagi sir has already mentioned so many things, which is very, very important points. Because before giving any commitment to the public, I think we should first see that which kind of source is there. If it is a groundwater, then it will be a problem. If it is a surface water, then again it will be a problem. So everywhere you have to supply the water after the treatment, proper treatment, because you are supplying the drinking water. So I think these are the valid points. Rest of the things are okay. I think I'm not prepared for that particular meeting, although I have joined it. But thank you very much for inviting me. Thank you, sir. Thank you, sir. So I'll request now the Dr. Dwarkanath to say about this today topic, because he has experience in the two government. He was part of the SDG also, in Delhi government also, and the Pondicherry government. So over to Dwarkanath sir. Good afternoon to everyone. Namaskar Tyagi sahab or Dr. Anil and all my colleagues. Sorry, I have joined little bit late. The program and the title is SDGs and the pandemic, whether it will have impact on that in achieving the SDGs. That was the topic that is given. Though, of course, it is a general this thing when the entire world has come to a standstill during the pandemic. No doubt that SDG also, the achieving also will have to be impacted, and it is impacted. There is no doubt about it. But one capability that has come during the pandemic is it is of multifold. One, our capabilities in terms of pharmaceutical and medical research
and effectiveness in giving the approvals. Otherwise, according to my knowledge, both national and international vaccine approval times, it takes lot of amount of R&D, and also the huge amount of resources and time also is consumed. So that being the case, now we are post-pandemic, more than a year after approval of vaccines, though we have approved vaccines much earlier than the stipulated normal time. Nothing adverse have been reported statistically. Significant, nothing adverse have reported. So one is to relook our approval processes and also try to shorten the time taken in giving the approvals. That is one thing. And second thing, as a part of lifestyle changes, we were advocating since Paris Agreement, or even before Paris Agreement, we were advocating regarding accounting of lifestyle changes that is there, especially in our Asian countries. And Guptaji also mentioned about this when I joined, locally consumption of our producers, we should encourage. Classical example, we can live without any imported fruits and foods that we have proved globally. We can very well survive during the pandemic time with whatever is locally available. So we need to introspect ourselves and then try to adapt the local lifestyles, which by itself will help a lot in achieving our SDGs. If you see SDGs, it is divided into 5 categories. One is about peace and justice and international networking and collaboration. The third one is directly related to climate change. And the first one is peace and governance, and the economy, zero hunger, and then another sector related to the economy and job creation. So if we introspect each of these SDGs, all of them advocate easy availability and consumption, locally food available consumption, and also energy consumption reduction in all the sectors. So these are the things which we need to address primarily to bring any targets which can be achieved, or we can strive hard to go near to the targeted dates by locally consuming our resources rather than dependent on the far-fetched resources. That is what we call it as scope 3 emissions, that is transportation emission and construction emission, and also associated with our all kind of consumption. So we need to strive hard by addressing and reducing our scope 3 emissions, and this will go a long way. With these opening remarks, I thank Dr. Anil and all other experts also. Thank you. Thank you, Dwarkanath sir. It's very important. डॉक्टर अग्रवाल जो है, जब वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में सेशन लेते थे तो हमेशा कहते थे कि जो मार्केट में, अगर सब्जी मार्केट में, फ्रूट मार्केट में जाते, जो फ्रूट या सब्जी आपको सबसे सस्ती लगे वो खाओ, बिकॉज वो लोकली जो ग्रोन होगी वो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रहेगी। एक तो आपको ये नहीं सोचे सस्ती मिल रही है, बिकॉज वो लोकली अवेलेबल है, उसमें आपकी कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो आपकी वो लोकली से वहां से आपके पास से नियर बाई की जो है फार्म से आई हुई है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है और भी नहीं है, तो वो सस्ती है। बट दिस विल बी गुड बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट, उनका हमेशा कहना था कि सबसे सस्ती जो मार्केट में है वो सब्जी और फ्रूट को जाके ले, बिकॉज उसमें आपके और जो उनका ये कलर था कि वो जो 6 कलर्स 7 कलर्स और 6 टेस्ट का, वो उसी पे फोकस था कि आप लोकली जो है जो नियर बाई मार्केट में उसको लेके आए, तो वो नॉट ओनली कि आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन भी होगा, उसमें कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा, तो ये वो उन्होंने ये फोकस उनका हमेशा रहता था लेक्चर में।
थैंक यू सर द्वारकानाथ जी। वो एक और पॉइंट अभी बताया था, एसडीजीज नोटिफाई तो हो गया 2015 में, वो ज्यादा पहुंचा नहीं है. I also do agree, but during the pandemic, thanks to the pandemic, I might have addressed close to 200 hours of various lectures in schools and colleges. Irrespective of whatever the day, whatever topic they give me, I co-opt a small 4 or 5 point slides on SDGs. And then I formulate my other part of the lecture, and then I made it a point whether SDG is the topic or not. I always try to rope in SDGs and then give some locally ideas where the institution can address towards achieving the SDGs. And I think this should be taken as a regular program, curriculum program by various ministries concerned, so that it reaches up to the general public also, and especially to the school and college going children and faculties. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, I'll request Neeraj Tyagi ji to, he is a expert in all subjects. I can say he speaks and he read a lot and also prepare the notes also. So I'll request Neeraj Tyagi ji to say about today's topic. Thank you very much. First of all, my respect to Paritosh Tyagi ji and Anil Kumar ji and other learned people here. This topic is very important because COVID-19 pandemic was the crisis that affected everybody in the world. और environment पर तो बहुत ही ज़्यादा जो हम environment से related efforts कर रहे थे उन पर बड़ा impact पड़ा. 2015 तक तो हम MDG की बात करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, लेकिन 2015 के बाद हमने SDG की बात करनी शुरू कर दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. और इसका कोविड क्राइसिस जो आई हमारी, उसने काफी हिंड्रेंसेस पहुंचाई और काफी हमें लेसन्स भी मिले. As mentioned by the United Secretary General in his call for solidarity when COVID-19 pandemic broke out, that we are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history of the United Nations. One that is spreading human suffering, infecting the global economy, and upending people's lives. He also added, we must ensure that lessons are learned and that this crisis provides a watershed movement for health emergency preparedness and for investment in critical 21st century public services and the effective delivery of global public goods. And we have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet. सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था कि हमारी जो फाइनेंसेस थी वो कोविड-19 से फाइट करने में बहुत सारे कंट्रीज जो पुअर कंट्री हैं वो भी उन पे इतने पैसे नहीं थे, तो वो एनवायरनमेंट के बारे में जो उनका फंड जाना था वो कोरोना से लड़ने में स्पेंड होने लगा. ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा. और इसके बाद जो हमारे जो निगोशिएशंस होने थे, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल निगोशिएशंस, 2020 was expected to be the super year of nature with a number of major international meetings and negotiations on environmental issues. And given the continued uncertainties arising from the ongoing COVID-19 pandemic, including those related to restrictions on travel and convening of large physical gatherings, many environmental negotiations were postponed. ये जो origin था COVID-19 का, इससे भी हमें बहुत सारे lessons मिले. While the origin of outbreak and its transmission pathway are yet to be ascertained, we know diseases pass from animals to humans. Zoonotic diseases are called, are on the rise as the world continues to see unprecedented destruction of wild habitats by human activity. Nature is sending us a message. With the coronavirus pandemic and the ongoing climatic crisis, according to the UN's Environment Chief, Inger Anderson, and other environmental experts, according to the various reports released in October 2020, future pandemics will emerge more often, spread more rapidly, do more damage to the world economy, and kill more people than COVID-19 unless
there is a transformative change in the global approach to dealing with the infectious diseases. The same human activities that drive climate change and biodiversity loss also drive pandemic risk through their impacts on our environment. Changes in the way we use land, the expansion and intensification of agriculture, and unsustainable trade, production and consumption disrupt nature and increase contact between wildlife, livestock, pathogens, and people. As the world experiences the dire consequences of the COVID-19 outbreak, discussions on how to prevent future outbreaks of zoonotic diseases have gained more attention. And according to the reports, escaping the era of pandemic is possible. It is possible. हम लड़ सकते हैं इन diseases से, but that this will require a seismic shift and approach from reaction to prevention. केवल react ही ना करें, उसकी prevention के बारे में सोचें. COVID-19 has its origin in microbes carried by animals. Like all pandemics, its emergence has been entirely driven by human activities. जो सबसे बड़ी चीज है, chemical and waste management से भी इसका relation है. हमने जो the fight against plastic pollution being hit by COVID-19 pandemic as the जैसे disposable mask हैं, gloves हैं, other protective equipment जो हमने use किए, तो उसमें प्लास्टिक भी थी, and plastic does not inherently make something clean and safe. Experts are proposing to bring back the bring your own cup scheme. UN agencies and partners insist that if effective measures are put into place, the amount of plastics discarded every year can be significantly cut or even eliminated. With this pandemic continuing to spread, national and local governments are urged to treat waste management, including medical waste, household, and other hazardous waste, as an urgent and essential public service in order to minimize possible secondary impacts upon health and environment. And hosing down migrants and workers. हमारे बहुत सारे migrant workers जब दिल्ली छोड़-छोड़कर भागने लगे थे, with the bleach to disinfect them in a ghastly and inhumane practice to combat COVID-19, UN special जो रिपोर्टर था ऑन टॉक्सिक वेस्ट, उन्होंने अपील किया सभी स्टेट से कि जो भी ब्रेव डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ऑन द फ्रंट लाइंस इन दिस फाइट, उनको किसी न किसी तरह से इसमें प्रोटेक्ट किया जाए. COVID-19 is having an impact on animals also. Great apes, of which 7 species are already threatened by extinction, are potentially vulnerable to this new virus. Lockdowns and the loss of tourism revenue also create challenges for protecting wildlife. The cost of COVID-19 to zoos could mean extinction for the 77 species of plants and animals, at least, that are extinct in the wild and exist only in the zoological and botanical collections. इसके अलावा जो biodiversity crisis हुई है, 2020 was expected to be the super year of nature with the number of international meetings and negotiations leading to global biodiversity conference that would agree on decade-long post-2020 biodiversity framework and the acknowledgement of nature-based solutions for climatic change, mitigation, and additional benefits. And their postponement brings worries as we are losing critical time to address the biodiversity crisis. Impact of COVID on air pollution also. Researchers found that the air pollution has intensified the pandemic. But the lockdown and related measures implemented by countries to stop the spread of COVID-19 have also led to decrease in economic activities and drop in road transport, temporarily cleaning skies and decreasing levels of certain air pollutants. Since the outbreak of COVID-19, many researchers have investigated the possible links between air quality, virus transmission, and death rates. The findings suggest
that air pollution aggravates the consequence of COVID-19. Climatic action जो है, while COVID-19 is the most urgent threat facing humanity today, but we cannot forget that climate change is the biggest threat facing humanity over the long term. Carbon dioxide remains in the atmosphere and oceans for centuries. Therefore, the world is facing continued climatic change, regardless of any temporary fall in emission due to the COVID-19 related measures in lockdown. Meanwhile, the United Nations Climate Change Conference COP26, set to take place in Glasgow in November 2020, was rescheduled to 2021 due to this COVID pandemic. तो COVID-19 की वजह से हमारे बहुत सारी जो negotiations थी वो postpone हुई. Leaders and experts around the world are calling for a profound systematic shift to a more sustainable economy that works for both people and planet, as governments are investing in stimulus packages also. Sustainable जो finance है, that is also need of the hour. Signatories to the principles for responsible banking show the positive role they can play by employing a wide range of measures to respond both to the direct health crisis and to the wider economic impacts. इसके अलावा जो हमारे environmental laws हैं, उनमें भी shift की जरूरत है. While lobby association rightly point to the significant challenges posed by an unprecedented global health crisis, some have explicitly called for postponement of environmental laws or loosening regulations that limit emissions from their facilities. In countries facing pressures on indigenous territories, the lockdowns are reducing the abilities of local communities to patrol. वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे त्यागी साहब ने भी वाटर के ऊपर कहा था, वाटर एंड सैनिटेशन का भी कोविड-19 में हमें spread of COVID-19 is closely related to water and sanitation, as cleaning hands can reduce the transmission and help people stay healthy. But today, billions of people still lack safe water, sanitation, and hand washing, and funding is inadequate. The global lockdown measures have led to decrease in fishing, tourism, and maritime transport activities. For some, this can be seen as an opportunity to ensure a sustainable development of these industries while recovering. So environment leaders, experts, and institutions around the world have been issuing various statements, other useful information, but many practical things on the ground are to be done. This all in this first meeting I want to say. Thank you so much, Tyagi ji. आपने बहुत डिटेल में you prepared very well and you covered most of the points related to the topic, and thank you so much. और मैं definitely आपके जो there's a very important point कि जो finances थे, that was we were diverted to the to fight the against this COVID-19, preparing the vaccines and buying the vaccines and other things. So or plus treatment of the people, arranging the infrastructure and things like. तो जो आपका फाइनेंशियल डाइवर्ट हुआ, प्लस जो मैन आवर वेस्टेज हुआ, उसे लोगों को यू हैव टू प्रोवाइड द फूड एंड थिंग्स लाइक. तो गवर्नमेंट का भी जो है इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और जो चीजें डेवलपमेंट पे और लोगों के इस पे होनी थी, चाहे पॉवर्टी पे हो चाहे हंगर पे हो, इस पे वो जो डेवलपमेंट पे वो आई थिंक डाइवर्ट हुई जो 2-3 साल में. दैट वाज दी जो बिग इम्पैक्ट. जो एसडीजी के जो फर्स्ट गोल्स 6 गोल्स हैं, वो आई थिंक दैट्स डायरेक्टली वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी जो है लोगों की जो है, जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है, जेंडर इक्वलिटी. जो 6 से इमीडिएटली फर्स्ट वाले 6 गोल्स हैं, तो आई थिंक वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी इमीडिएटली दी फॉर दी पुअर पीपल डेवलपमेंट. उनकी हेल्थ है और उनकी जो फूड है, उनका सैनिटेशन है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए. नाउ आई थिंक साहा साहब जय ज्वाइन, नाउ ही मे बी फ्री, सो आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर साहा to say. अरे आप लोग, first of all, I'm really feeling myself great and happy that people like you are always, we are discussing some issues on every Sunday. So many good statistics you NGOs also produced,
and given to us, shared with us. Neeraj ji ka jawab nahi. Neeraj ji, salute to, hats off to you, sir. Wonderful, excellent. All the topics you have covered. All the topics. Only thing, what I was thinking in the different ways, whatever we have learned, that has not been translated to a lesson to all of our citizens. That is most important issue. Until and unless we do that, until and unless we are able to take the participation of the people, we are not going to get the success. This is the whether it is a waste management, whether it is a water waste management, whether it is a health and hygiene, whether it is economic development. See, everywhere the people is related, and we are talking about their benefits, with their prosperity. Until and unless they come forward, we are not going to get the success. Once the sustainable development is just not a development, it is again whatever we are consuming that is required to be replenished. And replenishment is only possible when we are able to know how much we are able to replenish, and accordingly how much we should consume for our purposes. Because our earth don't have the unlimited resources, and these are going to destroy someday. And if we are not really conscious and consciously work for it, we are not going to get the success. So this is my submission to all. So all these things, information, like our Tyagi sir told that water consumption and wastewater treatment, but most of the people, I'm telling you, in urban areas, whatever I'm talking to the people, they are not both things. That is a really a huge burden for the ULPs. Huge burden for the ULPs. Even the fresh water, the treated water. That is, it also for wastewater treatment plant. So until and unless these balances are worked out, and these balances going to participate in this matter, because whenever we open the tap, we get something in a different way that people have to struggle to get some water, then they probably realize the value of water. So that is important for all of us. Government is working, no doubt, and no doubt government is working for achieving the SDG goals as fast as possible before 2030. But we can also expedite through education, through learning process, through participation, and all these things are very much important for us. So kind of you. Thank you very much, sir. Thank you. So much. Thank you, sir. Thank you, Sir. Covering a very important point. Now I'll request Vivek ji, though I am not, because he is our trustee and always ask him in the end to summarize things, but his point, because he is from the three different side, he worked in the particularly this pandemic, and as a industries also, as a public health expert with the so much coordination with Dr. K.K. Agarwal ji and environmentalist. So मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्यू में, because he has work in this part to provide all the services, including mask and all the PP kits and so many things in the pandemic, and also he is a great environmentalist also, to balance between what particularly the impact of this COVID-19 climate crisis in the SDG. So over to Vivek ji, sir. Namaskar to everyone. It was a pleasure listening to all of you in the panel today. The views were excellent, and I basically feel that most of the views have already been covered. However, I would like to add that as very clearly, distinctly put forward, there is enough for people's need and there is not enough for people's greed. Because needs can be met, but greed is abundance, it can never be met. The issue is that there has to be a
change in the consumer market from people's point of view also. Like we as an organization in our apparel division, we make only sustainable garments. Now, sustainable garments are something like which are made out of organic cotton or recycled polyester, and which does not cause burden on the environment. Now, if in the old times, yes, in India there was khadi and a lot of people consume khadi or vegetable dye fabrics. These don't have impact on the environment. It's very important for us to move towards that. The second thing is we in HCFI will also take up a very interesting subject in time to come, is that because of the various geographical locations, different kind of plants grow in different geography of the country. And it is very important that we plant the correct trees in the correct. I'm sorry, the line got disconnected. Coconut trees will only be in the coastal area or in the southern part of the country. It is very important that there is a consciousness towards what kind of trees to plant. The reason why I'm going on this, because pre-COVID and in COVID, the subject has already been covered today, in the day. So I just want to take it forward about from an action point of view, what we can do as a panel of, once we get the ideas. HCFI is definitely going in for more and more volunteers who can help us in taking action on all these environmental fronts. Unfortunately, because of COVID, we could not do it in the last 1 year, but definitely now, since people are more comfortable traveling, going into villages, going into various areas to to put it in action, and we have already taken action along with Mr. Mukul Chand in Vrindavan, and we already had one gentleman, Sonika ji, who came and he spoke on environment, on how we can have a better impact through use of cow byproducts like cow dung, etc. We have taken this in a serious way, and we are implementing this through HCFI's involvement. We will be doing it in Vrindavan again. So these actions are being taken, which I thought it is time that I should brief our panel of experts that whatever you all are discussing, HCFI is also getting involved in implementation of these things in the back, because we take your view seriously and we are trying to also execute them. Thank you. Thank you. Thank you so much, Vivek ji, for your views on not only in these conferences and meetings, but to implement on the ground with the help of the SCFI volunteers and SCFI team, who is very not much in number, but definitely dedicated team. So thank you so much, and your guidance and always the motivation is always for to implement the things like. So thank you, Vivek ji. Now I have time is just 5-7 minutes. So anybody, Ankit Sethi, want to say something, anything? नमस्कार सभी को सर। Yeah. सर 3 SDGs जो हमें लगते हैं इंडिया पर्सपेक्टिव से, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो मेजरली अफेक्टेड हैं। एक है SDG नंबर 1 सर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, पॉवर्टी। दूसरा है सर SDG 4, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि स्कूल्स बंद रहे हैं सर, काफी बच्चों को एक्सेस नहीं मिला है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है सभी के पास, तो काफी लोगों के एडमिशंस डिले हुए हैं बच्चों से, अभी एज लिमिट भी बढ़ गई है। एंड द थर्ड सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट SDG नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज बैडली अफेक्टेड सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, जॉब्स गई हैं लोगों की। तो ये 3 SDGs मुझे ऐसा लगता है सर, जो हम बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं ड्यू टू कोविड, और हमें इन 3 चीजों पे हमें आगे
बहुत और काम करने की जरूरत है ताकि हम कवर अप कर पाए बाय 2030. That's it. Thank you. Thank you, Ankit. But I think in the quality education, that also the opportunity, also the hybrid system of education, there's also new opportunity to learn actually. Whoever want to learn, ऐसा नहीं उसके लिए, so definitely the as a getting the physically going and the getting, but opportunity also the online learning and online things are there definitely for the higher education particularly. So एग्री I सर, बट think सभी को एक्सेस नहीं था. मतलब Yeah. अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास एंड रिच पीपल तो Yeah, ठीक है, बट definitely. सभी Middle class. कम्युनिटीज को नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल वजह से काफी दिक्कत हुई है. जी. और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी तो लोग बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए. दीज आर द रियल एग्जांपल्स. मतलब मैंने खुद बिल्कुल देखे हैं. बिल्कुल definitely I agree sir. You made very important points you raised that. So And, not only that, yeah, research has recently come out that those who got exposed to more electronic gadgets at a young age, maybe up to 2 years or 3 years, they are prone to virtual autism. That is a Yes, recent study which has come today only or yesterday. So we have to, other than subacute exposure of radiation from the electronic and electrical gadgets, which the kids are addicted to today, at a young age, that is at a developing age up to age 2, exposure to more electronic gadgets is going to be harmful, and it is a proved one. एग्री सर. इनफैक्ट सर आईसाइट्स भी बढ़ी हैं. मतलब लोगों की, बच्चों की मतलब आईसाइट्स बढ़ गई हैं. प्री कोविड के बाद देखे तो चश्मे लग गए हैं लोगों को ड्यू टू दीज गैजेट्स एंड ऑल. तो ये भी एक स्टडी हुई है और ये भी सामने आया है. yeah, so I think we discussed very important point. Anybody wants to say anything about other than whatever the views expressed earlier, or we have just 3-4 minutes to so that after that we can summarize. Anybody want to say add any point that So I would like to add, like Yes. the others have said, see, definitely environmental impact has had an adverse effect on people's health. From now we are talking about microplastic, which is leading to, liver and kidney problems in people. In a similar way, sustainable living is something which has to be seen like, even if you watch Netflix, there are a lot of programs in Netflix, about what kind of food we should eat, like, forks over knife, minimalistic living, how to have minimalistic living, all these things are very important for people to do. And it's not necessary that you change yourself once it affects you. It's a question that we need to change before it affects us, and not only us, and because of our own greed, we should not harm the environment where other people start getting affected by us, by this also. That is also very important. Yeah. So thank you, Vivek ji, and thank you all our expert member today spoke, Tyagi ji, Dr. Dwarkanath ji, Saha, Vivek ji, and Neeraj ji, and Dr. Sanjeev Agrawal, and everybody, Gupta ji. So I think we had discussed these. Definitely, these 3 are integrated. जो अभी जो 3C का इम्पैक्ट पर्टिकुलरली जो रहा एसडीजी पे है, सो चाहे वो कोविड पैंडेमिक हो, चाहे क्लाइमेट क्राइसिस हो, जो या कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे अब रशिया यूक्रेन वार का कितना लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी ऑल्सो दी एसडीजी पे, बिकॉज वहाँ पे भी जो एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन है और जो इम्पैक्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट का, ऐसे डिफरेंट जो नेबर कंट्रीज में हो रहा है डिफरेंट है, तो वॉर का भी इम्पैक्ट होता है, जो भी फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो दिस इज वन एग्जांपल. तो तीनों जो 3C का इम्पैक्ट है एसडीजी पे डेफिनेटली है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसमें जो है, जो फर्स्ट 2C है क्लाइमेट क्राइसिस और कोविड-19 का तो बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 2 साल में. तो आई थिंक दीज जो 17 जो एसडीजी वो केवल पेपर में न रह जाएं, we have need to be very implemented, we have to put in resource, we have to create more awareness on these things, so that कि लोगों तक ये, अगर हमने 2015 से आज 6-7 साल हो गए हैं, और जब तक इसको ग्राउंड में नहीं होगा तो हम ये जो चाहे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, ये अचीव करना इट विल वेरी डिफिकल्ट. जो अभी रिपोर्ट जो मैंने अभी फिगर्स बता रहे थे कि अगर हम इसी करंट रेट से चलते रहे
तो 2030 तक जो है, जो आपको 1.6 बिलियन पीपल विल लैक द सेफ्टी मैनेज ड्रिंकिंग वाटर और 2.8 बिलियन पीपल विल लैक दी सेफ्टी मैनेज सैनिटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और त्यागी जी ने दोनों को इंटीग्रेशन करके कवर किया है कि हम एक ऐसे इसको इंटीग्रेटेड वे में जो भी लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपलिटी लेवल पे, और जो भी टाउन की एरिया की म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे सिटी की हो, चाहे और किसी तरह से लेवल पे हमें इसको करने की जरूरत है। और तभी जो हमने ये टारगेट तो बना दिया यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में कि जो इसका पर्पस था कि जो एक्शन फॉर द एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये टारगेट लेके पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का तभी पॉसिबल होगा जब इनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो और जो इम्पैक्ट हुआ है इन दो चीजों का उससे ओवरकम हो। उसके लिए वी हैव टू पुट इन रिसोर्सेस ऑल्सो और लोगों तक अवेयरनेस हो। इसी के साथ आज हमने जो डिस्कस किया, जो SCFI हमेशा एक नए सब्जेक्ट को लेती रहती है इसी तरह से, सो वी कैन हैव डिस्कस मोर ऑन दी, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि डॉक्टर KK अग्रवाल का ये था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट पे अवेयरनेस, देन उसको ट्रांसलेट इनटू एक्शन, दैट वाज द पर्पस। और हम इसको हमारी SCFI की जो टीम है, वेरी स्मॉल टीम, ये डेडिकेटेड आप लोगों के सहयोग से एक्सपर्ट मेंबर के साथ कर रही है। तो इसी के साथ आज हम आज का जो सब्जेक्ट सेशन है विल एंड दैट, एंड वी थैंकिंग टू ऑल द एक्सपर्ट, एंड डेफिनेटली विल न्यू सब्जेक्ट विल ज्वाइन इन नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार।